नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बस सबसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डावोस में भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका बजाने वाले हैं, यानी कि इस सम्मेलन की जो शुरुआत होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से होगी। इस बार विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन भारत के लिए कई मायनों में खास है और ये दृढ़ता, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो काउंटर पार्ट्स के साथ आपको नजर आ रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात से शुरुआत करेंगे इस सम्मेलन की। विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन भाषण बस अब से कुछ ही देर में होने वाला है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आर्थिक मोर्चों पर भारत की कामयाबियों का हवाला देकर वैश्विक कारोबारियों से भारत में बिजनेस करने का आह्वान करेंगे। 2 दशकों में दावोस सम्मेलन में शिरकत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के रिश्तों को लेकर प्रधानमंत्री अपना नजरिया पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे कि क्यों भारत विश्व भर के कारोबारियों के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन है, क्यों भारत में आकर वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्यों भारत एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, क्यों यहां पर बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, विश्व बिरादरी के लिए पूरे संसाधन हैं, पूरी सुरक्षा है। ये थोड़ी ही देर में जो मंच हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से भाषण देंगे। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विस प्रेसिडेंट से मुलाकात कर चुके हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के 100 से ज्यादा सदस्यों से बातचीत कर चुके हैं। 18 देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रमुखों के लिए डिनर पर साथ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 6 केंद्रीय मंत्री, दिग्गज कारोबारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल, 2 योग शिक्षक हैं जो हफ्ते भर तक चलने वाले इस पूरे समारोह में योग की ट्रेनिंग देंगे। बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है इस वक्त दावोस शहर। 70 देशों के 3000 प्रतिनिधिमंडल एक हफ्ते तक यहां पर रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा, इटली के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलियो जैसे यूरोपीय देशों के प्रमुख भी इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। We're living in a time that we have to make our position very, very clear where we're standing. Do we move with the darkness or do we stand and support the light? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से होगी और समापन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समापन भाषण से होगी। क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, यानी कि विभाजित दुनिया में साझा भविष्य के निर्माण, ये इस बार की थीम है। ये इस बार का लक्ष्य है और उद्देश्य इसे आप कह सकते हैं। तो सम्मेलन की थीम है विभाजित दुनिया में साझा भविष्य का निर्माण, क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में इस सम्मेलन WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित करेंगे। ये स्वागत भाषण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप कह सकते हैं कि अपने मन की बात से WEF के समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विश्व आर्थिक मंच का ये सम्मेलन भारत के लिए बहुत अहम है, कई मायनों में खास है। भारतीय कंपनियों के विज्ञापन, ये तो बेहद खूबसूरत तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बर्फ ही बर्फ है। दावोस में अभी अगर कुछ नजर आता है तो वो सिर्फ बर्फ नजर आती है, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है। और दावोस शहर में इस बर्फ के अलावा अगर दूसरी चीज सबसे ज्यादा कोई नजर आ रही है
तो वो भारतीय कंपनियों के विज्ञापन नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी उम्मीद है। आइए सीधे हम आपको दावोस लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल कंवल, जो कि दावोस से हर खबर आज तक पर आपको पहुंचा रहे हैं, जुड़ चुके हैं। राहुल, अब से कुछ ही देर में यह भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कितना अहम यह उद्घाटन भाषण होगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का? राहुल, राहुल, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क इस वक्त हमारे संवाददाता राहुल कंवल से नहीं हो पा रहा है, लेकिन विश्व आर्थिक मंच पर बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। मंच पर संबोधित करने वाले हैं कुछ ही पलों में, संबोधन होगा। Dear President of the Swiss Confederation, Alain Berset, Prime Minister of India, the Honorable Narendra Modi, Your Royal Highnesses, distinguished heads of states and government, Excellencies, dear co-chairs, dear members and friends of the World Economic Forum. It's a great pleasure to welcome you all for the 48th annual meeting. Over the next 4 days, in multiple sessions, we will analyze the big challenges we all face, and we will try to find solutions and join, hopefully, in common action to address the deficiencies of our global system. We will do so under the theme, creating a shared future in a fractured world. There is no doubt that we are living in a complex, interconnected, fast-moving world. We all depend on each other. We are here in this room and we have a special responsibility to demonstrate that only through joint efforts we can improve the state of the world. In our dialogue and in our interactions, we have to be responsive to the voices of a fractured world. Sustained economic development can only be possible if we have social inclusion. I wish you a collaborative, a comprehensive, a constructive and an impactful stay here in the snowy Davos. It's now my pleasure to introduce to you the President of the Swiss Confederation and Federal Councillor of the Home Affairs of Switzerland, Alain Berset. For the last 48 years, Switzerland has been the home of the World Economic Forum. The collaboration between the Forum and the federal, cantonal and communal governments has been outstanding. And as the annual meeting has grown over decades, the Swiss government at all levels has been a true partner along the way, always ensuring excellent support, security, and above all, hospitality for all the participants. And I should add this year, and thanks for the very fast snow removing in Davos. I would like to use this opportunity to thank you, Mr. President, the government, the Parliament, and especially the people of the Canton de Grison and of course of our host city,
Davos Klosters. Mr. President, the floor is yours. Please welcome the President of the Swiss Confederation. Monsieur le Président, cher professeur. Thank you, my dear Professor Schwab. Monsieur le Premier ministre, Prime Minister, Excellences, Your Mesdames et Messieurs, Excellencies, ladies and gentlemen. je vous souhaite la bienvenue en Suisse, Welcome to Switzerland, ici à Davos, to Davos, pour l'édition for the 2018 2018 Forum annual meeting économique mondial. of the World Economic Forum. C'est pour la Suisse, For pays Switzerland, hôte du Forum, the host country un for the plaisir et un forum, honneur de pouvoir vous it is a accueillir. pleasure and an honor to be able to welcome you. We are here and ready to think together about the future of our societies and reflect together Qu'il enrichisse. about the trends and actions that bring change and prosperity. Nous comprenons très vite Looking back over the last few years, it's immediately clear just how pertinent the theme for this year's meeting un is, avenir commun, calling on us to create a shared future in a fractured world. parce que si l'année 2016 Whereas 2016 was a year of celle disruption, des surprises, surprises, celle des certitudes ébranlées, celle des confounded changements certainties inattendus, and unexpected eh changes. bien l'année 2017, c'est Well, plutôt 2017 was somewhat calmer. Alors, So what que se passera will happen en 2018? in 2018? Eh bien cette année, nous arriverons This peut-être à la year, conclusion will tout we à fait perhaps paradoxale reach the paradoxical que la conclusion disruption a émergé non pas that des extrêmes, disruption has emerged not du milieu de la from société. society's extremes, but from its alors que center, le progrès économique et while social social vient aussi and economic du plus progress grand nombre is des also milieux de la coming société. from the majority and reaching most Alors je crois people. que pour continuer sur la voie du If we progrès, are to continue walking this 2018 path doit of être l'année progress, où l'on réaffirme 2018 has to be the year l'importance where we de la reaffirm the collaboration importance of internationale international et collaboration du and multilatéralisme. multilateralism. Notre responsabilité commune Our shared doit retrouver la responsibility place qui, au has to fond, est return naturelle, to au its sommet rightful de la place liste des priorités. at the very top of our priorities. Mesdames et messieurs, nous sommes Ladies and confrontés gentlemen, à de nombreux défis. we face multiple Nous challenges. assistons à l'émergence de ruptures We are seeing the géopolitiques emergence of et à geopolitical l'émergence fractures d'instabilité dans de and nombreuses régions du instability in monde. many regions of the world. Nous voyons des conflits We are armés qui seeing durent, protracted armed qui conflicts déstabilisent that des sociétés destabilize entire et des economies économies and entières societies, et qui aboutissent à des déplacements leading to massifs de mass population displacements et qui entretiennent and le terrorisme. sowing the seeds of terrorism. Et puis, nous avons aussi And le then, changement climatique There is also nous climate préoccupe, change, et which les is a major inégalités au niveau concern and the mondial. inequalities at the global level. Et nous savons ce qu'il faut pour réduire ces We incertitudes. know what we need to do Nous savons ce to qu'il faut reduce pour these garantir la uncertainties sécurité and to et le guarantee bien-être the de la safety and population. well-being of our populations. Il faut de la We volonté need politique political will à chaque niveau. at all levels. Il faut un engagement fort There needs to be strong des involvement institutions from the internationales international institutions en faveur de la on sécurité, security, de la paix peace, et des droits de l'homme. and human rights. Il faut un partenariat entre There les needs to be a institutions partnership nationales et between national internationales. and international institutions. Il faut aussi une forte And there volonté also des needs institutions to be financières. strong engagement from Et pourtant, la financial tendance institutions. However, dans différents endroits du monde va in dans le many sens parts of contraire, the world, things seem to be moving in the plutôt opposite vers un repli direction, sur soi, looking inwards, un rather regain than des outwards, nationalismes, a return of nationalism, vers un rétrécissement de l'horizon towards politique a qui s'accompagne narrowing of the d'une certaine political méfiance outlook, à l'égard together with du multilatéralisme et mistrust du of, libre-échange. multilateralism and suspicion Ces of free évolutions trade. contribuent à creuser les fractures These trends plutôt que de les continue réduire. to widen Je suis existing convaincu fractures rather than narrow them. qu'il faut au contraire promouvoir la I, collaboration however, firmly internationale believe that we need to promote pour soutenir international les cooperation perspectives de stabilité in order to politique, promote political de stability, bonne gouvernance good governance, et de développement économique. and economic development. Parce que si la méfiance générale continue, Because if widespread mistrust and resentment continues to spread, it will be the poorest and the weakest who will be the first victims. Naturally, that necessitates political support at the national level. There can, ladies and gentlemen, be no international cooperation without states willing to cooperate.
And to achieve this, we need solid roots, we need strong ownership at the national level, and we also need to have shared confidence in collective action. Anyone who's scared of cooperation withdraws from the world. Our population's confidence in a state which creates structures and protects its citizens is essential to guarantee openness, dialogue and cooperation. Ladies and gentlemen, without strong support at home, foreign policy risks to remain empty words. And the strong growth of the global economy feeds the illusion that nationalists and protectionist movements were just a passing phase. But they are not. Economic good news stories must not blind us. We need to tackle far-reaching structural problems. And the lesson of the last 2 years is clear and still applies. The mainstream of society must see society as being fair, otherwise it will use its veto. There is only one solution: to remove the underlying causes of that unease, resentment and anger. To have a policy of social inclusion, ranging from educational opportunities for everybody to a social state that mobilizes people's talents, to a fiscal policy that allows us to invest in social cohesion. Our continued openness to the world. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये शुरुआत हो रही है डावोस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में शुरुआती भाषण देंगे, लेकिन दावोस में 5 दिनों तक चलने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस बैठक में व्यापार, राजनीति की कई दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 प्रतिनिधि मंडल सदस्यों के साथ यहां पर पहुंचे हैं। तो बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इसे आप उद्घाटन भाषण प्रधानमंत्री का जो होगा वो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के कदमों को इस बैठक में साझा करेंगे। हजारों विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले एच.डी. देवेगौड़ा बतौर प्रधानमंत्री 1997 में इस सम्मेलन का हिस्सा बने थे, लेकिन उन्होंने इसे संबोधित नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता या बातचीत में कई देशों के साथ हिस्सा लेंगे और उन देशों के प्रतिनिधियों को, उन देशों के व्यापारियों को, उन देशों के बड़े बड़े बिजनेसमैन को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को बताएंगे, हमारी आर्थिक शक्ति को दुनिया से परिचित करवाएंगे और वो बिजनेस के लिए जो माहौल जिसकी जरूरत होती है किस तरह से भारत में है ये बताया जाएगा। over a long period of time. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस बार का जो थीम है वो है क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। शाहरुख खान और ऑस्ट्रेलिया के अभिनेत्री केट ब्लैंचेट को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। बेहद खूबसूरत दावोस शहर और जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां भारतीय अर्थव्यवस्था की गर्माहट को महसूस किया जाएगा। Actually, it is clear that the better the educational and life opportunities people have, the greater a country's innovative strength, and the better women's position in the labor markets, the stronger the economy is. Over the past decades, the welfare states and the market economy have often been played off against each other. The game was wrong, as well as the assumptions.
After all, uncertainty and social injustice do not lead to economic prosperity. Fear is not productive. Fear does not drive innovation. The opposite is true. Security in society gives us the freedom to try out new ideas. Economic security gives us the courage to bring out the best in ourselves. And societies in which income is fairly distributed and in which there is equal access to health system also generate more trust among the members. And it is essential for a country to attract business, because no one invests without trust. Ladies and gentlemen, is this an argument in favor of the primacy of politics? No, it is not. We need a balance between politics and economics, just as we need a balance between competitiveness on the one hand and social solidarity and fair educational opportunities on the other. It is not the primacy of politics that we need. It is the primacy of the political. We need to recognize that political considerations form the basis of our society and form the basis of our value system, not only the material aspects of people's lives, but also their attitudes, feelings, and expectations. And this includes the rule of law, human rights, and democracy, and not least our sense of responsibility for the world's problems. Only if we base our actions on the primacy of the political can we oppose to the attitude of resistance, frustration and mistrust. Only thus, by strengthening political legitimacy domestically, can we strengthen international relations and cooperation. Let us make 2018 a year in which we overcome the phase of hand-wringing and self-criticism, in which each of us works to promote social inclusion. Thank you very much, President Berset, for so well framing the purpose of our being together here. It is now my distinct pleasure and great privilege to introduce our opening speaker, His Excellency, the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi. Prime Minister, we know each other since a number of years, but a very warm welcome to you on your first visit to Davos. Your presence here has a very special significance, as it comes at an immensely important moment in time. Globally, we are moving towards a multipolar, and I should also add, a multi-conceptual world, marked by precarious points of friction. In this seemingly fractured world, India presents a bright image of dynamism, of optimism, and promise. India is the world's largest democracy. With more than 1.3 billion people, India will be the most populous country within the next decade.
India's unique demographic dividend, rising tide of entrepreneurial spirit, breakthrough innovations in many sectors, and remarkable pace under your leadership, Mr. Prime Minister, of bold and structural reforms have boosted the macroeconomic fundamentals and enhanced India's long-term economic outlook and, of course, provides a great investors' opportunity. Under your leadership, Prime Minister, India is expanding its influence in a wide range of global initiatives, including the Paris Agreement, Climate Agreement, and the International Solar Alliance. India is guiding the world on how high-tech technological advancement, such as space mission, can coexist with grassroots innovation, social entrepreneurship, such as the payment ecosystem. India's philosophy of the world is one family, Vasu Daiva Kutum Bakum, that you often quote is closely aligned to the theme of this year's annual meeting, and today we all are looking forward to hearing you about your vision for India, for the world, and for India's role in the world. Personally, I would like to thank you for your country's continuous support of the World Economic Forum for nearly 4 decades. And as evident here in the room, for the strong Indian delegation, अपना समर्थन देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं। delegation of government and business leaders, and for many projects and initiatives, we have your support. And हमारे कई बात के लिए भारत ने हमेशा सहयोग किया है। देवियों सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कीजिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।